Recording is starting in a second. Yeah, the transcript has begun. Okay. Hi, good morning. Hello, Gunjan ma'am. A very good morning to you, and welcome on board in our heartfelt series of Dil Se Dil Ki Baat. Just to give our viewers a little introduction about what Heart Health India Foundation is. It is India's first patient-led organization that is talking about cardiovascular diseases. As of now, the current situation, India में आज की डेट में हार्ट डिजीज का स्प्रेड ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जिस तरीके से डायबिटीज के केसेस आ रहे हैं हार्ट डिजीजेस हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हार्ट डिसीजेस से रहता है उसके अवेयरनेस के लिए हार्ट हेल्थ इंडिया फाउंडेशन स्टार्ट किया गया है द यूनिक थिंग अबाउट us is that we are a patient-led organization. There was a cardiovascular episode that had happened in my family. I am the founder in the firm alongside with my husband, Mr. Ram. And once that incident happened, we thought that इंडिया के perspective में हम लोग जब जब लास्ट 3-4 सालों में हमने जो भी अपने रिसर्च से चीज़ें ढूंढना चाहिए हैं हमें इंडिया के perspective में कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस से हमें ऐसा लगा कि वो जो नॉलेज है वो आज लोगों के पास उस तरीके का स्पेशलाइज्ड फील्ड एंड हम लोगों को डॉक्टर से जो क्वेरीज रहती हैं वो नॉलेज आज की डेट में हमारे पास इंटरनेट पे शायद नहीं है और वो लुप्त हो गया है. And most of the things that we find on internet are giving citations to some international studies. And हम्म that is why Heart Health India Foundation की पहल यही है आज हम एक कम्युनिटी ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे डॉक्टर्स पेशेंट्स counselors सभी हैं and we want to create more and more awareness in between the Indian population on the cardiovascular diseases. And उसी में हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी है दिल से दिल की बात wherein we are bringing on board some of the experts in their specialized field. And today we have Dr. Gunjan with us, who's joining us from Bhopal. And over to you, Gunjan, ma'am. We would love to hear what your experience has been. She's a dental expert. And yeah, over to you, ma'am. Hi, Aditi. It's so nice to hear about the initiative. I know both of you personally also, Yes. and to take action for something and to make it better for people who are going through it. I think that's quite an initiative that you and Ram sir have taken. Uh, I am Dr. Gunjan and I have specialized in orthodontics. I am working as a clinician for the past 10 years and I will answer your queries today. Yes. So, पूछिए, please. Yes, happy to on board you with us, Dr. Gunjan, in this initiative of Heart Health India Foundation. And आज का हमारा डिस्कशन जो होने वाला है वो है डेंटल केयर एंड हार्ट डिजीजेस से रिलेटेड. We will try and bring up certain queries जो generally people who are going through the phase of heart diseases have undergone surgeries like angioplasty or bypass surgery or per se even have stenting like Yeah, angioplasty में जो yeah. रहता है उन पेशेंट्स के क्वेश्चंस को हम केटर करेंगे. सेकेंडली हम जो पीपल हैव अ हायर रेंज ऑफ कोलेस्ट्रॉल उनको किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री उनके क्वेश्चंस को भी हम आज अपने सीरीज में लेते हुए चलेंगे. So my first question to you, Dr. Gunjan, is the very basic thing, as in like अगर मैं आपके पास में पेशेंट की तरह आई थी मैंने भी सबसे पहली चीज यही पूछी थी कि how is oral health subject related to cardiovascular diseases? If you can just throw some light on that, please. देखो बहुत सालों से ये रिसर्च हो रही है आदिति दैट पीरियोडोंटल डिजीजेस दैट इज गम डिजीजेस है ना वो जिन पेशेंट्स में होते हैं उनमें कार्डियक इंसिडेंसेस ज्यादा होते हैं ठीक है Okay. इस पे बहुत सालों से रिसर्च चल रही है लेकिन देयर इज नो डायरेक्ट लिंक ठीक है Mhm. बेसिकली पीरियोडोंटल डिजीजेस जो होते हैं वो तब स्टार्ट होते हैं जब एक प्लाक लेडी फिल्म दांतों पे बने ठीक है एंड ऑब्वियसली देयर इज इन्फ्लेमेशन है ना बैक्टीरियल अटैक ज्यादा होता है उन दांतों में Right. सेकेंडली जब भी हम व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाक होता है ठीक है जो आर्टरीज में मिलता है विच इज लाइक फैट कोलेस्ट्रॉल है ना एंड कैल्शियम से बना हुआ होता है ना Okay. ये प्लाक जब आर्टरीज में होता है तो इसको आर्थीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं
ठीक है, दिस इज द हॉलमार्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। अब ये बोला जाता था कि गम डिजीजेस में जो प्लाक है और ये जो प्लाक है ना, इन दोनों में जो बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया है ना, वो सेम होता है ना। ओके सो इट वाज सेड कि गम डिजीजेस अगर आपको है तो आप में ये इंसिडेंस ऑफ हैविंग अ कोरोनरी इवेंट ज्यादा होता है ना। बट आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च, there is no direct relationship. A lot of people who have healthy gums have also had heart events, cardiac events, ठीक है, and vice versa, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ये सस्पेशन क्यों आता है, मतलब ये इतनी रिसर्च क्यों हो रही है, ठीक है। ये इसलिए हो रही है कि जब भी हम पीरियोडोंटल इन्फेक्शन की बात करते हैं, है ना, ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है ना। और जो लॉन्ग हेलो टर्म इन्फ्लेमेशन Yeah. होता Dr. है ना। Gunjan, I think we हाँ, lost you for a couple of seconds. Can you, या if you can या just repeat, please? या सो जो पीरियोडोंटल डिजीजेस होते हैं ये बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, है ना। Okay. कुछ टाइम के लिए अगर इन्फ्लेमेशन है, हमने पीरियोडोंटल डिजीजेस को ट्रीट कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये क्रॉनिक हो जाता है ना, तो दिस इज अ की कंट्रीब्यूटर, ठीक है, इन आथेरोस्क्लेरोसिस, Okay. दैट इज व्हाई रिसर्च इतनी चल रही है, इतने सालों Great. से चल रही है ना। The latest and the biggest population size they took was in 2008, हाँ। 2008 में इन लोगों ने कुछ 65,000 लोगों का इवैल्यूएशन किया टू सी इफ देयर इज एनी डायरेक्ट रिलेशनशिप, बट नथिंग कुड बी फाउंड, है ना। Okay. तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपकी गम हेल्थ ठीक नहीं है, सो आपको कोई ना कोई कार्डियक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है. प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जी जी Okay. जी, या And does this also have correlation with higher cholesterol values as well? Because see, having heart disease is, I mean, the detection has happened. But प्री स्टेज पे अगर कोई है कि हायर कोलेस्ट्रॉल हमारा LDL HDL का जो वैल्यूज हैं दे आर कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएटिंग एंड देर ऑन अ हायर रेंज, जैसे 200 का जो मार्क है अगर उससे ज्यादा है, तो क्या उसमें भी गम हेल्थ एंड ओरल हेल्थ पे इफेक्ट आता है विथ हायर कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज? आदिति, कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो ओरल हेल्थ के साथ में लिंक करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। ओके. इट इज द मेडिसिन दैट दे गिव, हम्म. कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। उसकी वजह से क्या होता है, जैसे अगर आप मानिए कि आप हाइपरटेंसिव पेशेंट करेक्ट. है, ठीक है, और आप बीटा ब्लॉकर्स पे हैं, ठीक है, यस. तो उससे क्या होता है कि सलाइवरी फ्लो इन द माउथ कम हो जाता है। हम्म. उसकी वजह से अगर सलाइवा कम है, ड्राई माउथ है, तो एक तो ऑल्टर टेस्ट सेंसेशन होता ही होता है, मतलब टेस्ट सेंसेशन आपका बदलेगा, है ना। ओके. दूसरी चीज दैट यू विल बी मोर ससेप्टेबल टू डिके, ठीक है, हम्म. मतलब आपके दांतों में केरी ज्यादा होगी क्योंकि ओके. नेचुरली सलाइवा फ्लश करता रहता है, ठीक है। हम्म. दूसरी चीज, अगर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ले रहे हो, ठीक है, जी. तो कैल्शियम चैनल चैनल ब्लॉकर्स जो है वो गम्स का इन्फ्लेमेशन कराते हैं, मतलब देयर इज अ जिंजाइवल ओवरग्रोथ दैट हैपेंस, ठीक है। ओके. सेम जब हम कोलेस्ट्रॉल के लिए मेडिसिन देते हैं विच आर कॉल्ड एज statins, है ना, राइट. उससे क्या होता है, जो हमारी कैल्सिफिकेशन होने लगता है ऑफ द वाइटल पार्ट, जो जिसको हम लोग पल्प कहते हैं, है ना। सो इट्स नॉट दैट आप कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज हाई कोलेस्ट्रॉल, है ना। यस. सो इट इज नॉट दैट कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी बॉडी में ज्यादा है तो आपको कुछ, इट्स द मेडिसिन, आई शुड से। यस. हम्म ओके. हम्म हम्म ग्रेट. बट डॉक्टर गुंजन, आज की डेट में हायर कोलेस्ट्रॉल है, मेडिसिन हैं, वी हैव टू, आई मीन, टेक केयर ऑफ द मेडिसिन पार्ट ऑफ इट. So, how, as a dental expert, you would move ahead with certain kind of procedures? So, patients हैं, आप सबसे पहले उनसे क्या एक प्रोसीजर अगर करना है या रूट कैनाल का प्रोसीजर होना है, एज एन एग्जांपल, तो उस केस में आपका क्या प्रोसेस फ्लो रहता है पेशेंट से कि सबसे पहले आप अपने ब्लड स्कैन्स या स्कैनिंग हमें करवानी जरूरी है? हाउ Aditi, डू वी to be स्टार्ट? very honest, in my clinical practice, अभी तो सिनेरियो ये है that most of the patients regularly within 6 महीने का blood work तो लेके आते हैं, ठीक है। ओके. But there are patients who don't who are not diagnosed,
ठीक है। हम्म सो द फर्स्ट थिंग वी डू इज एक रैंडम बीपी चेक तो बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यस कई बार पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि दे आर हाइपरटेंसिव, और अपने व्हेन वी टेक देयर रैंडम ब्लड प्रेशर एंड वो बहुत हाई लेवल्स आता है, देन वी टेल देम कि आप इसकी मॉनिटरिंग करो एंड गो एंड सी अ फिजिशियन, ठीक है। यस सो द फर्स्ट थिंग इज, आई थिंक इन एनी डेंटल क्लिनिक, है ना, आपको सबसे पहले आपके पास कोई भी फॉर अ नॉर्मल ओपीडी भी आ रहा है, एंड इफ यू आर टेकिंग देम फॉर अ प्रोसीजर, you should scan, you should take their blood pressure. That is the first thing I think anybody can do, ठीक है। करेक्ट करेक्ट Then obviously the patients who have some cardiac history, है ना, हम्म उनकी फिर आप पूरी हिस्ट्री लीजिए, get their blood works done, what हम्म medications are they on, आपको you या have to consider all that. ओके Dr. Gunjan, are there any specific things that you would want to highlight in today's session? जैसे हमने statins की बात करी. Let's also talk a little bit about patients who are also on aspirins Hmm. in that matter. Blood thinners, So, yeah. yeah, blood thinners पे जो हैं, and how does dental procedures then happen in those cases, and what all Aditi, see, precautions? yeah, Yeah. Aditi, any procedure which is an elective surgery, है ना, Hmm. सर्जिकल कोई भी प्रोसीजर हो, इट इज एज सिंपल एज रूट कैनाल्स में हमें ब्लड थिनर्स नहीं बंद करने पड़ते, है ना, Okay. लेकिन रूट कैनाल के बाद वी गिव क्राउन्स, है ना। Hmm. सो इवन इफ व्हेन यू हैव टू डू अ क्राउन कटिंग और प्रोबेबली अ सिंपल ओरल स्केलिंग Yeah. प्रोफाइलैक्सिस, है ना, Hmm. यू शुड टेल द पेशेंट कि आपको पहले आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से बात करिए, and we have to stop the blood thinning medications for at least the protocol is to stop them for before the procedure 48 to 72 hours पहले आपको वो बंद करने चाहिए। Right. कई बार the cardiologists don't give they don't, they're like अभी नहीं, we cannot stop the blood thinners at this point, Hmm. so then we postpone the procedure. Procedures, yeah, Yeah, and yeah. then some relief medicines are given for that Yeah, particular yeah, yeah. period, Then and we, things are then taken care then of. yeah, then most of the times it's the antibiotics and the painkillers which work. Yeah. Anna. Okay. Yeah, if it's an emergency, then your dental clinic, the clinic you're going to, should be equipped with cautery होती है जो हम लोग blood रोकने के लिए use करते हैं. There are certain medications which are given जब there are patients जिनमें blood नहीं होता, मतलब the oozing of the blood doesn't stop. So, they Right. should have all that with them. करेक्ट 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 सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक जो एक मेजर पॉइंट हमारे डिस्कशन से आ रहा है कि सबसे पहले हमें अपना स्क्रीनिंग अपने डॉक्टर से कोई भी चीज़ें बहुत खुल के अपने डॉक्टर से बात करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज आज की डेट में अगर कोई आपके पास पेशेंट आ रहे हैं एंड दे हैव अ हिस्ट्री एंड एज यू सेड दैट मेनी ऑफ देम दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है एंड ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स विच कैन बी सीन so yes start step by step, don't just rush into things and get yourself tested, then speak to your doctor openly about what all things have happened. Shyness से तो खैर कुछ भी नहीं होगा and as you mentioned कई सारी medicines ऐसी रहती हैं जिसमें हमें cardiologist जब तक green signal नहीं देते हैं we should not move ahead with the procedures. There are See, things. Yeah. I'm uh, sorry, I'm no interrupting you no in no between. please देखो, please. बहुत एक सिंपल सी चीज है आदत है ना, हम लोग जब भी एनी डेंटल प्रोसीजर वी कैन नॉट डू इट विदाउट लोकल एनेस्थीसिया, है ना। Correct. लोकल एनेस्थीसिया में जो मेडिसिन हम इंजेक्ट करते हैं दैट हैज सम वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स आल्सो, है ना। Okay. तो अनलेस एंड अनटिल आपको आप कि मतलब एज अ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मेरी क्लिनिक पे कोई पेशेंट आता है तो जब तक Hmm. मुझे उसके ब्लड प्रेशर के लेवल्स के बारे में कुछ नहीं पता, आई कैन नॉट इवन डिसाइड ऑन द लोकल Anesthesia. एनेस्थेटिक टू गिव, ठीक है। Right, तो right. सबसे पहला जो स्टेप है ना, दैट यू नीड टू टेक अ प्रॉपर हिस्ट्री फ्रॉम द Hmm. पेशेंट, ठीक है। और अगर पेशेंट आपसे ये बोलता है कि मैंने तो अपना ब्लड प्रेशर कभी मेजर नहीं करवाया, या मेरे को नहीं पता है, देयर आर पीपल जो एवरी फोर्टनाइट कराते हैं, देयर आर पीपल हु डोंट नो, तो फिर आप उनमें सबसे पहले आप ब्लड प्रेशर लें, ठीक है। Hmm. द पेशेंट्स हु हैव अ नोन कार्डियक हिस्ट्री, देखिए देखिए बहुत सारे पेशेंट्स में हम वो बंद कराते हैं ब्लड थिनर्स एंड उसके बाद प्रोसीजर्स के लिए लेते हैं, लेकिन आप अगर उनको सिंपल सा बोलेंगे कि आप एक ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम का टेस्ट करवा लें, विच इज डन एट एनी
prothrombin time is a newer concept now, है ना? Okay. That can be done at any lab. So, we can make it much more comfortable for them also, for the patients also. Yeah. क्योंकि वैसे भी आपको पता है एनी पेशेंट हु हैज हैड अ कार्डियक इवेंट है ना, वो कुछ भी कराने में और उसकी फैमिली थोड़ा सा तो झिझकती ही है. So it is easier for the clinician also to handle them, Hmm. and it is easier for the patient also. So I think the basic thing is you should take a proper history, और Yeah. कुछ basic से चीजें आप कर लें तो उनके Yeah. लिए भी बहुत easy है और हम लोगों के लिए भी बहुत easy हो So जाएगा. planning is the key here for Yeah, every planning is the patient. key. Planning is the Great. key. Planning is the key. Correct, correct. And Dr. Gunjan, do you have any certain tips, specially for heart patients, to take care on their oral health? Because I understand बार-बार procedures होना या tooth का problem होना could be a little, as you said, कि कुछ भी कराने में झिझकती हैं families. And let's not just confine ourselves to people who are have undergone heart disease and they have found out that they are heart patients, but also to the families who knows कि हम लोगों के यहाँ पे higher cholesterol values आती हैं, family में high Hmm, cholesterol की hmm, problem है, hmm, hypertension hmm. की problem है, higher BP है. So in general oral health care उनको कैसा रखना चाहिए? And yeah. देखो आदिति, द प्रोटोकॉल एवरीवेयर इज दैट जहाँ पे डेंटल इंश्योरेंस होता है, ठीक है, दैट Hmm. 6 मंथ्स में आपका एक जनरल स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ठीक है. Okay. इंडिया वी डोंट हैव अ सिस्टम, है ना. Hmm. आप 6 मंथ्स में नहीं, आप कम से कम साल में एक बार फॉर अ रूटीन डेंटल चेकअप जाओ, ठीक है. Okay. सबसे पहले तो, है ना. Hmm. दूसरी चीज बहुत सिंपल सी चीजें हैं, जैसे हम वी से ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, ठीक है. Yeah. बट हम लोगों को, आधे से ज्यादा लोगों को हमें ब्रशिंग कभी स्कूल में नहीं सिखाई. आप Hmm. समझ रहे हो? ठीक है. Yeah. Yeah. आधे से ज्यादा लोगों को हमें ब्रशिंग की टेक्निक ही नहीं पता है. Right. आप समझ रहे हो? ठीक है. Correct. सो देयर इज अ प्रॉपर वे इन विच यू ब्रश, यू Hmm. नो. वो एक बहुत सिंपल सी चीज है जो मुझे मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि वो स्कूल लेवल पे इट शुड बिकम अ कम्युनिटी प्रोग्राम दैट वी शुड एक्चुअली टीच आवर किड्स हाउ टू ब्रश, है ना. Yeah. Right. तीसरी चीज होती है फ्लॉसिंग. फ्लॉसिंग इज कई बार होता है देयर इज अ थ्रेड जिससे Between the यू हैव things. टू, Yeah. या, it's difficult for people who don't know how to do it. It's difficult, है ना. Correct. There are water flossers now available, Amazon से लेके हर जगह मिलते, ठीक है. तो Right. Right. you can use that. And then if you're on medications, अगर आपको पता है that आप higher hypertensive हैं और you're taking medicines, तब तो फिर आपका डेंटिस्ट से हर 1 साल में मिलना should be your protocol. कि Yeah. आप if you're on medications, if you're taking beta blockers, और अगर आप calcium channel blockers पे हो तो आप जाके वो करें. बाकी डाइट में इफ यार बोलना बड़ा वो रहता है दैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लो, ठीक है, Hmm. and I have healthy food. But yeah, I think high fiber foods, something like salads in your diet, obviously, है ना. Yeah. स्मोकिंग इज अ कॉज, मतलब स्मोकिंग मेरे ख्याल से रेड फ्लैग है दोनों जगहों पे, है ना. Okay. कार्डियक हिस्ट्री के लिए भी एंड ओरल हेल्थ के लिए भी. सो Okay. स्मोकिंग इज समथिंग यू शुड अवॉइड, Yeah. मतलब थिंग्स लाइक दिस. बाकी Yeah. जैसे लोगों को लगता है कि अगर माउथ वॉश यूज करेंगे तो बहुत ओरल हेल्थ काफी अच्छी रहेगी. आई थिंक अगर आप सिंपल गुनगुने पानी में नमक डाल के भी गार्गल कर लें रात को सोने के पहले, Hmm. तो इट शुड डू द ट्रिक. Right. Right. I think quite interesting things you told here. क्योंकि mouthwash तो I think Listerine का usage everybody feels कि चलो meeting के पहले let's just do a Listerine and yeah, eating carbs, chocolate day आज and I think dark chocolate is also considered कि heart friendly things में से आती है, but then oral care जब तक नहीं उसके साथ में रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो problem भी दे सकती है. हैविंग अ चॉकलेट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, पर उसके Okay. बाद आप जाके सिर्फ एक गागल कर लें, Yeah. है ना. Hmm. दैट्स दैट इज इम्पोर्टेंट. Great. Great. इफ यू डोंट हैव टाइम फॉर ब्रशिंग तो आप सिर्फ गागल कर लें. करेक्ट. जी. सो गुंजन मैम, क्योंकि हम लोग इतना कॉन्वर्सेशन कर ही रहे हैं एंड वी आल्सो टॉक्ड अबाउट स्टैटिन्स हियर,
So let's debunk some myths which are associated with certain medicines and dental care. Okay. Yeah. जैसे आपने बताया कि statins जो होते हैं वो माउथ ड्राई करते हैं and there is a possibility कि थोड़ा statins जो है they cause calcification of canals, ओके है ना? ओके Beta blockers, dry mouth. ड्राई Yeah, माउथ रहता है. yeah. सो ड्राई माउथ होने के कारण टूथ डिके की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. सो इन दैट केस गुंजन मैम हाउ डू वी बैलेंस आउट दीज थिंग्स, क्योंकि मेडिसिन लेना तो बहुत जरूरी है. अब उस केस में बीटा ब्लॉकर अपना बंद नहीं कर सकते. सो व्हाट आर द टिप्स एज अ See, Aditi, डेंटल I will एक्सपर्ट not tell टू you, गिव. I'll not give you a medicine for, another medicine. आप समझ रहे हो ना, आप बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हो और मैं फिर से बोल दूं कि ये वाला माउथ वॉश यूज कर लो, ठीक है? या. If you are on beta blockers and you know this problem is there, that dry mouth हम्म. होगा, तो आप intake of fluid एक तो अपना बढ़ाइए, आप पानी पीना ज्यादा शुरू करें, नंबर ग्रेट वन तो, ग्रेट ठीक है? राइट. नंबर टू, वही that your saliva is not there to swish your teeth, you know? हम्म. तो आप जाओ यार, जाके सिर्फ एक गागल कर लो, ठीक है? और थोड़ा सा शाम को वही वाटर फ्लॉसर यूज करना स्टार्ट कर दें. राइट. ब्रशिंग जो है वो दिन में 2 बार करें एंड यूज अ फ्लोरिडेटेड probably टूथपेस्ट. यस. So it's not very difficult, या. maintaining is not very difficult. या. सो सी, फ्यूचर की प्रॉब्लम ना हो इसलिए सबसे पहले अपनी स्क्रीनिंग कराया हमने. अपने डेंटल का जो एक ईयर बुक है उसमें मार्क कर लिया कि वी हैव टू गो एंड सी आवर डेंटिस्ट, Yeah, है yeah. ना. One, एंड देन दे विल हाँ. गाइड यू थ्रू विथ ऑल दीज थिंग्स दैट डॉक्टर गुंजन जस्ट सेड कि देखिए हर चीज के लिए मेडिसिन की भी जरूरत नहीं है, बट देन यू कैन जस्ट रिप्लेस योर करंट Hmm. टूथपेस्ट विथ Hmm. अ Hmm. फ्लोराइड टूथपेस्ट Hmm. एज यू Hmm. मेंशन. There यू are, कैन. there या. are toothpaste जो specially ऐसे individuals के लिए आते हैं जो जिनके caries prone teeth होते हैं, ठीक है? राइट. So probably your dentist will recommend that, ओके. changing one thing, can change a lot of things. तो आप सिर्फ यस. एक toothpaste अगर change कर लो, तो ही बहुत सारी problems से आप बच जाओगे. Amazing, amazing. And सी अगेन एज अ फाउंडेशन हम लोग अवेयरनेस में यही बात करना चाहते हैं लोगों से कि जो अपने को हार्ट की प्रॉब्लम है ना वो सुनने में बहुत डरावनी लगती है कि इसके कारण और 100 प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. बट देन आज हम डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स से स्पेशलाइज फील्ड में जब बातें कर रहे हैं हम लोगों को यही रियलाइज हो रहा है कि वो हमें ऐसा लग रहा है कि वो मेडिसिन हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं, बट देन सी दीज आर लाइफ सेविंग ड्रग्स वन. And then when you talk to the experts they will give you the replacement of those things. आज की डेट में मेडिकल साइंस इतना एडवांस है that don't stop yourself from whatever you have had and don't hide yourself in a shell. Yeah. Open up, talk about it, and doctors will guide you through the entire process. Doctors are your friends, guys. They are always there to help you. Talk to them, and I think गुंजन मैम ने जैसे मेंशन किया वो हमें पर्सनली जानते हैं. एंड हमारे घर में भी जब मेरे हस्बैंड को जो हार्ट की प्रॉब्लम है उनका जब डेंटल प्रोसीजर होना था देयर वर सो मेनी डूज एंड डोंट्स का लिस्ट दैट मैम हैड गाइडेड अस थ्रू. एंड आई थिंक वो प्रोसीजर जब प्रॉपरली 1.5 मंथ चला था, क्राउनिंग के प्रोसीजर्स चले थे मेरे हस्बैंड के. एंड आई थिंक उसमें हमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आई थी. एंड आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ ट्रस्ट यू हैव ऑन योर डॉक्टर व्हेंस यू आर गेटिंग ऑल दीज काइंड ऑफ प्रोसीजर्स डन. सो स्टैटिन्स के साथ बीटा ब्लॉकर्स के साथ भी पेशेंट मैम के पास में आते Calcium रहे channel हैं. blockers. I या. mean, see, Aditi, the simple सी एक चीज है that there's certain precautions you as a patient and certain precautions I as a clinician have to take. यस यस And then everything becomes, seamless. फिर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते. यस. गुंजन मैम इसी कॉन्वर्सेशन के थ्रू एक मैंने मिथ की क्योंकि हम लोग बातें कर रहे थे तो क्या ऐसा कुछ भी है कि हायर कोलेस्ट्रॉल जिन पेशेंट्स के अंदर डिटेक्ट किया जाता है तो उनका रूट कैनाल के प्रोसीजर्स करना डिफिकल्ट होता है. गूगल करते हैं Um, तो ये आता है एंड दैट इज व्हाई आई आई नो, थॉट. आई नो. या. देखिए, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब आप statins ले रहे होते हैं, ठीक है, तो कैल्सिफिकेशन ऑफ कैनाल्स होता है. लेकिन आदिति, ये और भी पेशेंट्स में होता है. इट्स नॉट ओनली पेशेंट्स हु आर टेकिंग statins. आप समझ रहे हो? जैसे ओके. वी ओपन अ कैनाल, हम लोग रूट कैनाल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डेंटल प्रोसीजर्स एनी क्लिनिक डू, यस. तो हम लोग कभी भी whenever we start the procedure and we don't find the canals are basically जो हमारा जो pulp होता है which is the vital part of the tooth, वो इन canals में होता है. यस.
पीछे के जो टीथ होते हैं उनमें ये मल्टीपल होती है ना। Hmm. इंटीरियर्स आगे के जो दांत होते हैं इनमें एक कैनाल होती है ना। Okay. तो कई बार है कि वो पेटेंट ही नहीं है, हम अपना इंस्ट्रूमेंट ही नहीं डाल पा रहे हैं और हमें समझ में आता है कि ये तो कैल्सिफाइड है, Oh, calcification है, so okay. root canals cannot be done, you know. So Okay. this is, it's yeah, the incidence is higher when patients are on statins, पर ये और भी उनमें और भी patients में मिलती हैं। ऐसा नहीं अच्छा. है, that's it's Okay. only with cardiac patients. Okay. Oh, Yeah, or so patients on statins, yeah, on high, yeah. जिनका higher cholesterol है। Okay. Another, I think, myth that you Yeah, have actually yeah, given example and talked about the real hmm, fact with us. hmm, Thank you. hmm. Google पे इसलिए guys इतना ज़्यादा मत trust करिए, as I'm again saying, please talk to the specialized doctor and get to know a lot of many things here. Uh, गुंजन मैम, आपके आज तक के आई मीन मोर देन अ डेकेड का आपको एक्सपीरियंस रह चुका है, एंड इन अ कंट्री लाइक इंडिया वी हैव सीन सो मेनी केसेस. Would you like to give us few examples wherein कुछ oral health issues से हमने cardiac health किसी का detect किया हो कि improper होने के कारण there were cases like this wherein yeah, or Aditi, I vice will not, versa as well. Yeah, I will not give you examples which are like surgical, बहुत ही, yeah. बहुत सिंपल सी चीज है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको सच में नहीं पता होता that they are hypertensive, है ना? Oh, okay. And they come and then, we have to probably extract a teeth, and before extracting a teeth, you have to take a random, blood pressure just to see that, कहीं पे ये तो नहीं है that are hypertensive, they're not diagnosed hypertensive, है ना? Yeah. So that is one of the most common things which happen with us कि हम उनसे बोलते हैं अच्छा then एक दिन बीपी लिया, then we ask them चलिए 20 minutes बाद लेते हैं और वो consistently बढ़ा हुआ आता है, and then Oh we my tell them God. कि आप जाओ, you go to a Ah, physician, you go and see somebody for your blood pressure, you know. okay. Yeah. Yeah, So this that's is very common. Yeah, this is very common. Another side of the story is that whenever anybody, who has to go for a cardiac surgery, hmm, so they say the cardiologist will refer you to a dentist कि आप जाके hmm. पहले अपनी थोड़ी सी oral health ठीक कराएं, Oh, and okay. then we'll take you for a surgery because then another source of infection नहीं होना चाहिए, Oh, you because know. of the Yeah, plaque which is yeah, there and the yeah, bacterial yeah, infection. yeah, Oh, yeah, oh, oh. That so is really then, new. yeah, Yeah. yeah. So Okay. that then first we do that and then they take them for the surgery. But yeah, hypertension is one thing I think which is the most undetected Hmm. uh, diagnosis, जो कई बार because of our routine dental procedures uh, Has and हम लोग, has yeah, and you follow certain yeah, and then protocols we and then you was refer, detect, yeah, yeah, yeah. the doctor. Gunjan ma'am, is there also a certain kind of age demographies that I mean detected here? Is has it only been seen in people who are between 30s to 50s or something like that? Would you like to No, Aditi, I'll not correlate with it with the age. Yeah, I can correlate it with, socioeconomic status, okay. but I cannot correlate it with age. बट इसमें सभी एज के ऑलमोस्ट लोगों के साथ Yeah, में. yeah, yeah. ओह I माय mean, गॉड. I think, yeah, I think, अगर आप urban population को देखो, educated and urban population, है ना, they do get routine checkups done, है ना, but करेक्ट. when you talk about the low द socioeconomic, मार्जिनलाइज्ड, या yeah, yeah, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड अदर they don't have the time to, or करेक्ट they don't have probably the रिसोर्सेज टू concept, या that yeah, you should get yourself, checked every 6 months. राइट राइट. एंड एज यू सेड कि एज वाइज इसमें कुछ भी नहीं रहता है. ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैव बीन डिटेक्टेड एंड सॉर्टेड आउट probably for from mid 20s to early Yeah, yeah, 30s to yeah. mid 30s, all of Smoking का this. incidence, I think, because younger generation में ज़्यादा होता है ना? Okay. So yeah, smoking is one thing which, yeah, I can relate it with age because, after 35, 40, I see a fewer people, I see fewer people smoking now. Hmm. But yeah, smoking is a red flag for both of, for both the things, for the oral health also, as well Yeah. as the cardiac Okay, okay. health. Right. And so, Gunjan ma'am, I mean, since we are coming
we have almost like talked about so many different aspects of how oral health and cardiovascular diseases are related. Any good tips that you would want to give to the patients who have been detected with higher cholesterol values and are hypertensive or I mean, in the bracket of the heart disease club, I would say. So, would you like to give certain quick 5 tips for them for maintaining good oral care? I think, yeah, Mm, mm. Aditi, very simple, mm, brushing twice a day, है ना? yeah, Probably flossing once before ending your day, है ना? hmm, तीसरी चीज that थोड़ा सा if you have fibrous, है ना? Rich food, है ना? आप सैलड्स लें, है ना? okay, आप okay, कुछ भी, fibrous, anything, fruits, vegetables, all that in, uncooked form. ठीक है? So it's good for both the causes, and okay. get yourself checked once in 6 months. Yeah, I think Hmm. this actually summarizes our entire Hmm. discussion because prevention is better than any cure, हाँ obviously. हाँ हाँ And uh, I mean, these are some wonderful tips जो कि अगर हमारे viewers सुन रहे हैं and जिनको हमेशा एक fear रहता है कि dental procedures कराने जाएं नहीं जाएं डिले कर देते हैं उसके कारण problems और increase हो जाएंगे. But then these are certain kind of good things that I think Gunjan ma'am has taught us today. And yeah, See, there are a please. lot of options now when it comes to dental, जब आप dentistry वो पुरानी वाली dentistry नहीं है, ठीक है? Hmm. There are a lot of additions which have happened over the years. So Yeah, यार बहुत the most fearful patients also, we have a solution कि भाई उनको anesthetic मतलब जो local anesthesia दिया जाता है उसके पहले भी a combination of oxygen and nitrous oxide can be given to them कि उनको वो जो apprehension है, वो जो डर लगता है, वो ना हो. And especially for cardiac patients, they say जो known cardiac patients हैं that you keep shorter appointments for them. उनको सुबह जल्दी बुलाओ, है ना? yeah. Their appointment should be early. Clinic बहुत भरी हुई नहीं होनी चाहिए. मतलब there should not be a lot many patients उनके साथ में. Simple things. And I think dental treatment can be much less painful experience for them. Oh wow. Yeah, I हाँ think see हाँ बचपन से ही ना डेंटिस्ट जब अपनी चेयर पे रिक्लाइन कराते हैं आई थिंक वो फियर डेंटिस्ट से मिलने का सबको यही रहता है टूथ का प्रॉब्लम वो पेन तो असहनीय होता ही है बट उन प्रॉब्लम्स को हम और नहीं बढ़े इसलिए अपने डेंटिस्ट से प्लीज मिलिए जानकारी लीजिए देयर बीन सो मेनी गुड थिंग्स दैट गुंजन मैम हैज शेयर्ड विद अस मेडिसिन Another thing, या Aditi, now they are doing a research on resolvents. ये ओके derivatives होते हैं omega-3 fatty acids के, है ना? ओके They actually act like anti-inflammatory agents, है ना? तो ये topical liquid के जैसे they are trying to develop it, हम्म so that the entire जो periodontal inflammation है और because of arteriosclerosis जो inflammation in the फ्रेश arteries है ना? यस If this is, this can be a breakthrough ओके for, it's still, the research is still going on, है ना? ओके पर अगर if they have this, artery inflammation or periodontal inflammation दोनों को कम करने के लिए, if the resolvents are given a go ahead, या so it will change the face of how we go about things. करेक्ट 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 आई Hmm. मीन सी आज इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है जिस तरीके का हम लोग खाना खाते हैं लोग कहते हैं वो आग में घी डालने का काम करता है तो हायर कोलेस्ट्रॉल के साथ ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आज की डेट में 1 in 5 person में हायर कोलेस्ट्रॉल एंड उसमें एज का तो कुछ डेफिनेशन है नहीं जिस तरीके का खाना हम खाते हैं 15-18 ईयर्स से भी बच्चों में टीनेज में हायर कोलेस्ट्रॉल की समस्या देखी गई है डायबिटीज की प्रॉब्लम है ही हाइपरटेंसिव मेडिसिन हैं बट उस
केस में अगर हम देखें कि एक डेंटल प्रॉब्लम को हम लोग हाइड करके रख दें, अपने शायद डेंटिस्ट को ज़्यादा ना बताएं, जाके सिंपल सा प्रोसीजर करवा लें. सो आई थिंक दिस सेशन हैज़ बीन सच एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस, wherein you have talked about certain good medicines, wherein research is happening, and the medical science is also advancing in the right direction, and how right from aesthetics to welcoming the client, and making them comfortable with the surroundings, all these things a dentist already knows. So, guys, I think this session has been so insightful, and thank you, Gunjan ma'am, for all the amazing things that you have summarized in this short period of time. I'm so sure that people must be wanting to hear more and more about all these things, and if there are certain queries, they can obviously drop in the queries in the comments section. एंड यस, डेंटल एंड ओरल हेल्थ जिसके गूगल पे बहुत सारे मिथ्स थे, आई थिंक यू हैव टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ देम सो नाइसली एंड क्लियरली इन अ वेरी कंसाइज मैनर. एंड हमारी यही कोशिश है, जो लोग इन सब चीज़ों से भय करते हैं, फियर करते हैं, अपने बाकी के डॉक्टर्स को नहीं मिलना चाहते हैं क्योंकि उनको ऑलरेडी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है कि इतनी मेडिसिन तो चल ही रही हैं यार, ठीक है, दांत है, जब बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा तब देखेंगे. एंड लेट्स नॉट प्रोक्रेस्टिनेट थिंग्स, लेट्स मीट द डॉक्टर्स, कंसल्ट. इफ एंड यू या. हैव एनी पीरियोडोंटल प्रॉब्लम, मतलब अगर आपको गम्स में ऐसा लगता है कि आपको कोई इन्फ्लेमेशन है, आपके कुछ दांत लूज हो गए हैं, हम्म. आई थिंक यू शुड गो एंड सी, बिकॉज हो सकता है कि आपका डेंटिस्ट थ्रू रेगुलर स्क्रीनिंग आपका वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, तो आपको आपका वो जो रिस्क फैक्टर है ना, ऑफ यस. आर्ट द इन्फ्लेमेटरी लोड ऑफ द बॉडी जो है ना, वो ही नहीं रहेगा, तो यू एटलीस्ट आप एक रिस्क फैक्टर तो कम कर रहे हो. Correct, correct, correct. Yes. So thank you so much, Gunjan ma'am. It was such a wonderful session. आपके साथ बात करते हुए कैसे 40 minutes फटाफट चले गए, आज पहली बार रियलाइज ही नहीं हुआ. And thank you once again, Heart Health India Foundation. The entire team is really grateful to have such wonderful doctors around us, and we are really blessed to have friends in such doctors who have been a guiding light to us. And yeah, thanks for your time today. And Thank you, Aditi. Thank you for the opportunity, and it was really great talking to you. yeah, uh, and we will definitely send in ma'am's clinic details in the comments section. And if anybody in any Bhopal or in questions, Central i India, i yeah, would be happy to take any questions. yes, As and when you get them, we'll yeah, again do a session. for sure. Thank you so much, Gunjan ma'am. It was really Okay, see nice. you, Bye Aditi. bye. Bye, bye. Bye. Bye, bye.